I just woke up after a 1 hour nap. Like आज मेरा इंग्लिश का पेपर था, जनरल इंग्लिश का, which was a easy one. So इसलिए मैं 1 बजे फ्री हो गई थी. तो यूजुअली मेरा एग्जाम 2 बजे खत्म होता है. एंड देन घर आके मैं सो गई थी. एंड देन हियर आई एम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई बी स्टार्टिंग विद टुडेज करंट अफेयर्स बिकॉज आई हैवंट डन देम. एंड उसके बाद आई बी स्टार्टिंग विद माई एग्जाम प्रिपरेशन. मेरे 2 मेजर एग्जाम्स बचे हुए हैं, विच इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 1 and 2, out of which one is day after tomorrow. So I will be preparing for that in this vlog. Before starting, let me make a nice cup of coffee for myself because I am feeling a bit sleepy. So let's make coffee first. हाय गाइस, सो आई जस्ट नीड टू डिस्कस समथिंग विद यू. अगर आपको भी लगता है कि एआई सिर्फ चैट जीपीटी से आंसर्स देने तक ही लिमिटेड है, तो यू आर ऑलरेडी वन स्टेप बिहाइंड, क्योंकि अब उससे भी एक बड़ी चीज आ चुकी है, विच इज एजेंटिक एआई. डिफरेंस सिंपल है. नॉर्मल एआई आपको सिर्फ आंसर्स देगा, वहीं एजेंटिक एआई कैन एक्चुअली डू रिसर्च, प्लान, break down complex tasks, use different tools, even complete workflow with very little human input. And इसी वजह से कंपनीज ऑलरेडी एजेंटिक एआई अडॉप्ट करना स्टार्ट कर चुकी हैं. एंड आने वाले टाइम में सिर्फ एआई यूज करना इनफ नहीं होगा, एआई के साथ एफिशिएंटली काम करना आना चाहिए. एंड अगर आप सोच रहे हो कि ये सब प्रॉपरली सीखे कहाँ से, तो रिसेंटली मुझे सिंपली लर्न के एजेंटिक एआई कोर्सेज काफी इंटरेस्टिंग लगे. मुझे जो चीज़ अच्छी लगी वो ये है कि कोर्सेज बिगनर फ्रेंडली हैं, हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स के थ्रू प्रैक्टिकल लर्निंग करवाते हैं, रियल वर्ल्ड यूज केसेस कवर करते हैं और टॉप यूनिवर्सिटीज़ और लीडिंग टेक कंपनीज के कोलैबोरेशन में डिज़ाइन किए गए हैं. चाहे आप स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या करियर स्विच प्लान कर रहे हो, डिफरेंट लर्निंग पाथ्स अवेलेबल हैं. तो अगर आप भी एआई को सिर्फ यूज नहीं बल्कि मास्टर करना चाहते हो, तो गूगल पे सर्च करो सिंपली लर्न एजेंटिक एआई कोर्सेज, अपने लेवल के अकॉर्डिंग कोर्स चूज करो और लर्निंग स्टार्ट करो. ऑल्सो यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. Okay, then let's continue with our vlog.
I have fourth unit of judiciary, like in my PABAT paper, politics and administration. I have my fourth unit as judiciary, so I will be studying it from my polity notes only, which I've made from like my UPSC classes. So yeah, I will be revising from them only. Hi guys, so I just had a nice shower and got ready. I woke up around 8 today. Like I had a session with my mentor at 8:30. It was a half an hour session discussing UPSC strategy and all of that. And then I started with my fourth unit, which is coming in tomorrow's exam. That is judiciary. So I have completed that. And now I'll be starting with a fresh unit, which I have not touched. The other one which is left is partially studied. So it is kind of manageable. I'll have lunch now and then continue with my studies. बारिश आई है एंड मौसम इतना प्यारा हो गया ना, बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा। बट ज़्यादा कोर्स नहीं बचा है, थोड़ा सा ही बचा है, बट स्टिल इतना अच्छा मौसम में आई जस्ट वांट टू चिल। आई जस्ट डोंट वांट टू स्टडी, आई नीड टू डू दैट। बैक टू वर्क।
Now I just need to revise. It's 9 p.m. right now. Like I took a long break just because like I had guests over my place. So okay, let's study.